Hello dear students, now in this video lecture we have discussed our another syllabus topic of a disease health and disease, that is the amoebiasis, okay, or it is otherwise known as amoebic dysentery. तो कौन कहले पिले देख बर्तमान आम स्टार्ट करवा गोटे टॉपिक जोटा कि आमर कौन होची इट इज वन टाइप ऑफ प्रोटोजोआल डिजीज फर्स्ट आम कहि परिबा एटा गोटे वन टाइप ऑफ प्रोटोजोआ द्वारा इफेक्ट होची सेति पय बोली एटा प्रोटोजोआल डिजीज बोली मते कहै छै तो एटा असला हम देखो द डिजीज नेम इज amoebiasis and it is otherwise known as amoebic dysentery. एटा मते हमें otherwise कौन बोली कहि परिबा amoebic dysentery बोली मते हमें कहि परिबा. नेक्स्ट कौन असला the first and the important of the all the diseases, that is the main is the I already told you the main is the causative organism. सब जाक डिजीज रो मेन जिनसडा जोडा बहुत इंपोर्टेंट सेटा हला तार मेन हला causative organism. तो देखो एई जो हमर एमोएबिसिस अछि बा एमोएबिक डिसेंट्री अछि एई जो डिसेंट्री बा एमोएबिक डिसेंट्री रो मेन causative organism के the main causative organism is एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका. तो कौन कहला एटा एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका. तो इट इज ए वन टाइप ऑफ प्रोटोजोआल डिजीज which can cause diarrhea to the human being, and this type of disease is worldwide spread. ए जो disease ता total worldwide rate of spread ही रही अछि and all the humans one day will be suffering from this type of disease. The amoebic dysentery it can cause diarrhea. एटा हम कोन करछ हम देहरे डायरिया करिवारे साहाय्य करछबा. It will be causing diarrhea to us. The main causative organism is the एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका. तो देखो पिले गोटे जिनसना हमें बुझिबा बा नाटा हमें केमि केभळे मन रखिबा बा एई जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को धरि के हमें कहि दे परिबा तार साइन एंड सिम्पटम्स कोन कोन हेइथिबो. तो देखो एइटा को मु रिपीट लिखुची कोन कहला द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज द एंटामोइबा. ओके तो कौन कहला देखो एटा माने धीरे धीरे डिवाइड करबा. तो एठु हमें कहि दे परिबा सिम्पटम्स ता कोन कोन होते. द इट इज द मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज द एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका. देखो पहले तो ये जो हमर जो मेन रहिला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज द एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका. तो एटा को हमें डिफरेंट पार्ट्स रे विभाग करछे. तो देखो द एंट the entamoeba the first part is the ant and it will be come from the antrium which means intestine. It is related to the intestine. एटा कोट डिराइव हिचे हमरो intestine. That means the word ant which refers to the antrium and it is the related with the intestine. Next one is the amoeba, that is the name तार जो जनरल नेम ता amoeba रो name of the organism. नेक्स्ट असला हिस्टो. ये जो हिस्टो वर्ड हमें सुनिते स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. दैट मींस द टिश्यू इट इज रिलेटेड टू द टिश्यू. इडा का रिलेटेड हला हमें टिश्यू को माने देखो पहिले सब जिनसडा हम बायोलॉजी जतली पढुचे गोटे अर्थ गोटे वर्ड दिया हि मान तार किछि मीनिंग अछि एवं ई जो मीनिंग ता हमें जदी जो वर्ड्स ता को इफ वी कैन separate it we can get our the result or the symptoms or the what are the why this name will be given हमें जानि दे परिबा. तो एटा नेक्स्ट असला हमरो it is the antum it is the antrium which means the which is related to intestine and the amoeba is the name of the organism. The amoeba or the genus name is the amoeba. Next is the histo, that means it is related to the tissue, and lytica, that means it will be caused to death. Lytica which means death. बुझि पालो. तो सिंपली एटा मु कहि दोची जो ऑर्गेनिज्म ता की हमर इंटेस्टाइन रो टिश्यू मानन को डेथ करोची सेही जो ऑर्गेनिज्म का हमें कोन बोली कहचे एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका बोली कहचे. बुझि पालो द टिश्यू द ऑर्गेनिज्म or the parasite which can cause intestinal tissue death or the intestinal tissue damage, that will be is the Entamoeba histolytica, and that is the causative organism of the amoebiasis or amoebic dysentery. Due to the death of the tissue in the intestine, it can cause ulcer,
एटा हम कोन कर दउछ अल्सर एटा हम कोन करे अल्सर करूची घा करे दूची अल्सर करे दूची और टिश्यू डेथ होची एंड व्हिच मे कॉजेस टू डिसेंट्री एमोइबिक डिसेंट्री which may cause to amoebic dysentery ओके तो एटा फोल्डर हमर एटा बुझि पाले हम कोन जे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तक हम कोन करले क्लासिफाई कर देले तार माने मीनिंग तक हम जानले why the name will be the positive organism name will be given Entamoeba histolytica next we have discussed now in now we are discussed देखो कौन कहला वर्तमान हमें डिस्कशन करिबा द लाइफ साइकिल ऑफ द एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका ये जो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका अछि ये आर लाइफ साइकिल टा और ये जो व्हेन दैट ऑर्गेनिज्म विल बी एंटर इन आवर बॉडी हाउ दे विल बी गोज देयर लाइफ इन आवर बॉडी जनरली तो सेति पय बोली कि द इनक्यूबेशन पीरियड of this disease the incubation period of this disease that means that when the symptoms will be viewed or start viewing in our body that is the incubation period ei jo incubation period ei jo particularly ei jo amaro amoebiasis ba amoebic dysentery ro generally amaro 4 to 6 stage 4 ରୁ 6 दिन रहउछ आरो इनक्यूबेशन पीरियड ओके बेले जानिलो तो नेक्स्ट हमें देखिबा इनक्यूबेशन पीरियड देखि साला पर हमें देखिबा वर्तमान एई जो हमें पीरियडिकली बा तार डिफरेंट स्टेजेस हमें पढी दबा तापर मु इजीली तुमु डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन रे बुझी दिबी आउ तो तुम इजीली बुझी जिवो तो देखो बेले कोन कहला the first one is the causative organism that is the Entamoeba histolytica and the life cycle of the Entamoeba histolytica ये जो Entamoeba histolytica रो लाइफ साइकिल लगा हमें वर्तमान डिस्कस करिवा तो कोन कहला the life cycle of Entamoeba histolytica involves in 3 stages एटा जनरली हमर केतरा स्टेज रे जाउची तीनोटी स्टेज रे जाउची okay the life cycle will be completed in our body by the 3 stages that is the trophozoid stage one is the trophozoid stage next is the pre-cystic stage and last one is the cystic stage बोल समान रखो the life cycle of the Entamoeba histolytica is complete होची in our body by the 3 stages that is the trophozoid stage pre-cystic stage and the cystic stage let's start the what is trophozoid stage रे कोन हुए फर्स्ट देखिए हमें these are the feeding stage of the parasite and the parasite is measuring about 20 to 30 micron in diameter एई जोठी हमें देखिबा तो कोन कहला द ट्रोफोजोइड स्टेज रे कोन कहला इट इज द these are the feeding stage feeding माने कोन रे पिले खाइबा तो ए माने कोनटा खाइबे सर किछ नै हमर सेल टा को डैमेज करिवे बा टिश्यू लेवल टा को हमर डैमेज करिवे तो सेटा का माने फीडिंग करंती तो कोन कहला ट्रोफोजोइड these are the feeding stage of parasites that means the organism which will be come into our body and it cause and the life cycle will be goes on in our body depending on the another organism गोटे organism बंचिया पय जदी अन्य organism पर डिपेंड करते ताल तक हम parasite will को तो कोन कहला these are the feeding stage of the parasite which is measuring about एमानक साइज से समय केते थाउची which is measuring about 20 to 30 micron in diameter तांकर साइज ता केते रुहे से समय रे 20 to 30 micron in diameter कार the Entamoeba histolytica next they lives in the intestinal wall and dissolve the lining of the mucus by the proteolytic enzyme एई जो माने एबे वर्तमान माने कोन आसले देखो मु डायग्रामेटिकली करूची लेट दिस इज द Entamoeba histolytica or the cyst it will be goes to our body through the different type of food particles ए जो food particles that is the food particle or by the contaminated water हला नै ए जेटा हला contaminated food or contaminated water एइटा हम देह कोन होची contaminated food बा contaminated water द्वारा हम देह रे एंटर करूची
when it will be enter to our body, ये जो हमर बर्तमान कोन हला द कंटामिनेटेड फूड हमर वाटर द्वारा हमर गला थ्रू द ओइसोफेगस इट विल बी रीच इनटू द स्टोमक स्टोमक आसी पहुंचला पर से नेक्स्ट आछे हमर ए जो हमर इट कोन अछि हमर स्मॉल इंटेस्टाइन अछि स्मॉल इंटेस्टाइन रु से जाई लागि छै हमर लार्ज इंटेस्टाइन रे हला तो देखो तो वर्तमान ये कौन कला जो कंटामिनेटेड फूड बा ड्रिंक ता जतले कि हमें इनटेक कले खाइले तो ये हमर कोन होची द स्टेज will be goes into our body, after that it will be reach into the stomach. ये कौन असला हमर स्टोमक रे रीच कला स्टोमक रीच कला पर when it will be goes into the intestine हो जाय कि हमर कोन होचे लार्ज इंटेस्टाइन हो जाउछ तो देखो बिले भल से बुझ स्टेजेस जाको माउथ रे बुझेबी किछ प्रॉब्लम नै ट्रोफोजॉइड स्टेज रे कोन गला दीज आर दी फीडिंग स्टेज माने जतोले कि माने हमर पार्टी भितर जाउचंदी स्टोमक रे जाई पहुंची जंती सेतो ताय माने साइज ता 20 to 30 माइक्रोन इन डायमीटर थाए एवं से माने देखिबा को हमर माने से माने हम बॉडी भितर गले नेक्स्ट असला द लिव्स इन द इंटेस्टिनल वॉल ए माने कोन करले हमर इंटेस्टिनल वॉल रे ए माने अटैच हेकि रहिले देखि पाछो तो ए माने कोन हले इंटेस्टिनल वॉल रे अटैच हेकि रहिले नेक्स्ट the intestinal wall and dissolve the lining of the mucus by the proteolytic enzyme एवं एमाने कोन कर दछ डिसॉल्व कर दछ हमर जो म्यूकस लेयर ता अछि हमर ई जो इंटेस्टाइन रे ए जो म्यूकस लेयर ता एमाने कोन कर दछ डिसॉल्व बा खाइ दियंदी बा नष्ट कर दियंदी by the help of one proteolytic enzyme गुटे proteolytic enzyme द्वारा एमाने सेडा नष्ट कर दियंदी नेक्स्ट the divide by binary fission the that is the asexual reproduction and sexual reproduction. In the asexual reproduction it is again divided into different types. The first one is the binary fission due to they will be do the division by the binary fission emane kon karanti semane multiplication hei janti mane semanakar life cycle ta growth karanti or the reproduction karanti by the help of binary fission and make ulcer in the intestinal wall ebong emane amara इंटेस्टिनल वॉल रे कोन कर दियंती अल्सर करि दियंती माने इंटेस्टिनल वॉल टा डैमेज कर दियंती बा इंटेस्टिनल वॉल रे हमर कोन हि जाय किछि अल्सर फॉर्मेशन हि जाय इंटेस्टिनल वॉल रे इट इज द फर्स्ट स्टेज ला ट्रोफोजॉइड स्टेज नेक्स्ट जिमा में प्री सिस्टिक स्टेज कोन कहला दिस इज द लेस एक्टिव स्टेज हैव मेजरिंग अबाउट 7 to 10 micrometer in diameter एटा सेते माने डैमेज करंती नाही but they have the less active because they in their size is the 7 to 10 micrometer in diameter or it is the stage is otherwise known as minute stage एटा को हमें minute stage बोली मध्य कहि परिया pre cystic stage or minute stage that means the cyst wall is not formed at that time next the feeds bacteria they are rounded and store food materials by the form of glycogen एमाने आंको देह रे कोन करंती सेतो से माने राउंडेड हि जानती हम देह का आसला परे ए माने राउंडेड हि जानती मु देखेबी तुमको ए माने कोभलिया देखा जिवे तापर मु जाउछ हला तो जनरली तो बुझि पालो कंटामिनेटेड हमर केमिति होची नेक्स्ट देखो कोन हला when they will be enter in our body जतले के माने हमर बॉडी रे एंटर करंती they are the look like जदि हमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखिबा ए जो एंटामोएबा हिस्टोलिटिका जनरली ए भलिया देखा जाय हला this is the pseudopodium karyogamy endometrium cytoplasma हला तो एमाने हमर जनरली ए भलिया देखा जानती तो एमानकर कोन होचे आमे जतले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढिथिले when the microorganism have
मल्टीपल फिजन रे तमर पढ़िथिबो मन पका तो सही समय कोन हितला व्हेन एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द अनफेवरेबल कंडीशन जतले से कोन रे अनफेवरेबल कंडीशन रे रहे से दे विल बी प्रोड्यूस ए हार्ड कवरिंग अराउंड देम एंड वी दैट वी कॉल्ड एज सिस्ट हमें सेटा कोन कहते cyst बोली कहते हला नहीं तो when the favorable condition come the cyst wall will be rupture cyst wall टा rupture ही जाउची and the microorganism will be goes on that is the multiplication phase हम पढ़ी थिले जोटा कि हमरो asexual reproduction तो cyst माने कोन पढ़ जान देला तो it is a one type of hard covering around them से माने चारियाडे से माने कोन करंती गोटे hard covering गोटे प्रोड्यूस करंती तो नेक्स्ट स्टेज रे एठी कोन हेति देखो the feeds on bacteria they are round and store food material by the form of glycogen से माने এই जो प्रकार थिले माने कोन हेले राउंडेड हे गेले एवं ए माने कोन करले निज देह रे किछि फूड मटेरियल स्टोर कर देले एज ए ग्लाइकोजेन हिसाब से माने ग्लाइकोजेन हिसाब से माने कोन करले फूड मटेरियल स्टोर कर रखले नेक्स्ट this stage leads to the another stage ei jo stage first asla amar kon asla first asla trophozoid stage that is the feeding stage next stage is the pre-cystic stage ro पूर्ववर्ती stage and the last one is the cystic stage वर्तमान माने कोन हो जाउतंदी cystic stage जाउतन तो cystic stage कोन होची next कहला this stage leads to the another stage known as cystic stage वर्तमान माने कोन हेले next stage पळेले जोटा को हम कोन बोली कहिले जे cystic stage बोली कहिले भल से बुझ नेक्स्ट कोन कहला इन दिस सिस्टिक स्टेज देखो पिले सेही जो डायग्राम रे हम कोन करथिले जतोई कंटामिनेटेड फूड ता ह्यूमन ता इंटेक कला यार ओइसोफेगस देके आस्थिला ओइसोफेगस देके स्टोमक देके पास कर जायथिला स्टोमक देके हमर स्मॉल इंटेस्टाइन तापर लार्ज इंटेस्टाइन जायथिला एही जतो समय रे देखो फर्स्ट बल रखो when they will be goes or the it will be in the cyst stage first से माने कोन थांती cyst stage रे थांती next stage जतोई से माने पळा आसंदी that is the non mobile stage and when they will be goes into the body or the infected that is the trophozoid stage next जतोई की माने first जतोई when it will be reach to the stomach देखो स्टोमक जे आसला बेलू से माने सिंगल सेल हे की थांती हला नै स्टोमक रु जतोई से माने इंटेस्टाइन को जानती भल से बुझो इंटेस्टाइन को जानती से माने 8 सेल स्टेज ही जानती एंड हमें ई जो 8 सेल स्टेज ता हम कोन बोली कोचे ट्रोफोजॉइड स्टेज बोली कोचे एटा कोन बोली कोचे এই जो स्टेज जो हम कोन बोली कोचे ट्रोफोजॉइड हला এই जो 8 सेल स्टेज ता जतोले से माने इंटेस्टाइन को जानती सेटा को हम कोन बोली कोचे ट्रोफोजॉइड स्टेज बोली कोचे वर्तमान ई जो ट्रोफोजॉइड स्टेज रे ए माने कोन होंती हमर पुणी से माने when they will be reach into the small intestine after they will be goes into the large intestine small intestine से माने जे पहुंचले large intestine हमर कोन अछि fecal matter of the stool अछि they will be again goes into our body तो एई समय रे मानकर कोन होछि सेल स्टेज ता होछि तो देखो सी जो सेल स्टेज ता डिवीजन किमित होछि मु तुमको ऑलरेडी कहली they will be do by the binary fission से माने बाइनरी फिजन द्वारा से माने कोन करंती से मानकर रिप्रोडक्शन करंती जतोई समान रिप्रोडक्शन करंती when they will be in the single nucleus stage जतोई कि जो हमर पैरासाइट ता ए जो पैरासाइट रो जतोई कि सिंगल न्यूक्लियस स्टेज रे थिला when they will be in the single nucleus stage it is called as trophozoite एटा को हम कोन बोली कोचे ट्रोफोजॉइड बोली कोचे हला ए जो ट्रोफोजॉइड से नेक्स्ट कोन हला धीरे धीरे जाय कि टू सेल स्टेज रे फॉर्मेशन हे गेला एंड सर्कुलर हे गेला सिस्टल फॉर्मेशन कला एवं टू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बोली कहि गेला सेटा को हम कोन बोली कोचे नेक्स्ट स्टेज को हम जाउचे यूनि न्यूक्लियोटाइड सिस्ट नेक्स्ट असला दीटा जतोले हे गेला बाई न्यूक्लियोटाइड सिस्ट से भलिया जतोले से 3 सेल स्टेज पळेव तीनटा न्यूक्लियस जतोले से फॉर्मेशन कर दबो ट्राई न्यूक्लियोटाइड स्टेज when they will be goes into the fourth stage देखो एई जो पाखरे वर्तमान ता देहरे कोन हला चारिटा न्यूक्लियस डिवाइड हे छला this is called as quadrinucleated stage
quadrinucleated stage, and at this form ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କି quadrinucleated stage ରେ ଥାନ୍ତି, it is the infected stage. ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା, infected stage ବୋଲି କହିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରି ସିस्ଟିक ସ୍ଟେଜ ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ସିस्ଟିक ସ୍ଟେଜ। ତ ସିस्ଟିक ସ୍ଟେଜ ରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, during unfavorable condition, कार unfavorable condition, during the एंटामोeba हिस्टोलाइटिका जेतले unfavorable condition थाए, the parasite form a resistance wall around them which is known as cyst। ता चारियाडे जो गुटे कवरिंग गोटे कर दिए जेतले अनफेवरेबल कंडीशन थाए सेटा हमें सिस्ट बोली कहउचे। नेक्स्ट इन दिस स्टेज द न्यूक्लियस ऑफ द पैरासाइट्स डिवाइड्स ट्वाइस। एही समय रे कोन होचे, पैरासाइट रो देखि पाछो न्यूक्लियस ता दिथर डिवाइड हिची, वन टाइम टू टाइम दिथर डिवाइड हे कोन हेची से फोर न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज को जाईची। दैट इज द इन दिस स्टेज द न्यूक्लियस ऑफ द पैरासाइट डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म फोर न्यूक्लियाई। त चारियाडे से कोन करिची, चारिटा न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करची। This quadrinucleated comes out along with the human fecal matter or the stool। बर्तमान এই जो quadrinucleated, quadri माने कोन चारिटी, जेहेतु चारोटी न्यूक्लियाई रहिছে सेतिपाई बोली कि एटा हम अदरवाइज द quadrinucleated stage इज अदरवाइज नोन एज infected stage। एटा मध्ये हम infected stage बोली कहबा। बर्तमान এই जो quadrinucleated stage when it will be reach into the large intestine and it will be mixed with our fecal matter or the stool, they will be released in our body, release to our body, हम देहरु से माने रिलीज हे गेले, and by the help of flies, different type of flies मानक द्वारा they will be contaminated the water and the drink। वर्तमान माने कोन कर देले, वाटर और ड्रिंक टा के माने कोन कर देले, कंटामिनेटेड कर देले। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जान लो। वर्तमान देखिबा मोड ऑफ स्प्रेड। वर्तमान माने स्प्रेड किमिति करछन। तो ए माने हमर कोन हला, तो ए माने देह रे कि भलिया रहिले, कोन कले हमें जानले, इंटेस्टाइन वॉल रे रहिले, इंटेस्टाइन को डैमेज कले, जतोल कि एटार माने अनफेवरेबल कंडीशन आसला समान तांको चारियाड उडे कोन कर देले, सिस्टोल फॉर्मेशन कर देले, एवं से माने एट द टाइम से माने कोन करतली द न्यूक्लियस टा को टू टाइम्स डिवाइड करके फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज रे कन्वर्ट हो जाउतली। दैट इज कॉल्ड आवर क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड स्टेज, एंड दिस स्टेज इज द इन्फेक्टेड स्टेज। सेटा को हम इन्फेक्टेड स्टेज बोली मध्ये कहू। वर्तमान दे विल बी मिक्स विथ नाउ दे विल बी मिक्स विथ आवर fecal matter which is be present in our rectum and release in our body, and through this the stool, when the different flies are put on it or by the help of different flies, it will be contaminated by the water and the different type of foods। Now we have discussed about the mode of spread। वर्तमान हमें देखिया mode of spread कि भलिया होछ। ओके देखो बिले एबे वर्तमान कोन देखिया हमें, देखिए वर्तमान the mode of infection, how the disease will be transferred from the one person to the another person। The parasite get inside the body of the healthy person by contaminated human food। मु जोटा कि ऑलरेडी तुमको कहलेनी, contaminated human food, drink, vegetables by the help of flies। जेतोल कि ये कोन होची, when we can do the open deflection, that is हमें जेतोल खोला रे हमें झाड़ा फेरछे से समय रे the flies will be take this type of virus and their flies will contaminate the food, water, different type of food, water, vegetables by the help of flies। flies द्वारा एटा कोन होची, मोड ऑफ स्प्रेड टा होची। नेक्स्ट आसला प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जनरली एटा को ऑलरेडी हमें सबुठी प्राय सेम रुहे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कोन कहला, जनरली द पर्सनल सैनिटेशन एंड हाइजीनिक। नेक्स्ट आसला हैंड वॉशिंग बिफोर टेकिंग फूड। Water should be boiled before drinking। पीवा पूर्व पानी टाको आमे कोन करबा, we should boil the water and filter as well। Next, fruits and vegetables should be washed properly before making food। हला नै vegetable fruits vegetables जाको जो सब fruits जाको आमे कोन करिया, भल से धोइबा before eating। नेक्स्ट असला protect the food from the net। जो खाद्यटा आमे प्रस्तुत करते ताको आमे नेट बा जाली द्वारा सेटा को आमे घोड़े रखिबा। ह्यूमन फेसेस शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जो ता पाई मेनली होची, ह्यूमन फेकल मैटर ऑफ द ह्यूमन फेसेस शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। से सब आमे कोन करिया, डिस्ट्रॉय करिया, नष्ट करिया, प्रॉपर्ली आमे सेटा नष्ट करिया। अवेयरनेस, द एजुकेशन एंड अवेयरनेस, बिकॉज this type of disease mainly spread rapidly or continuously or within a speedy movement, so that
we should give awareness to the villagers or to prevent from the open deflection माने बाहर खोलारे आमे शौच करबानी बोली वर्तमान सेटा ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत गुडे चली देखी तुम अमिताभ बच्चन गोटे एडवर्टाइज आसूसी से से सब कौन होचे आमर अवेयरनेस प्रोग्राम होचे जो जाकि जो लोक माने जानु नांते सब विषय से मानु आमे कोन करबा एजुकेट करबा और अवेयरनेस दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नेक्स्ट वन इज द डायग्नोसिस आमे को भलिया जानि परिबा ड्यू टू it will be we can do the stool culture test or the stool examination in the microscope and the stool also contains some blood because they will be defect our intestinal wall then they will be cause ulcer to us so that sometime that when the tissue will be damaged the blood also come with the stool sangare kon symptoms re sei jo symptoms re seta tame lekhi di paribo next last one is the treatment re kon कहला एमिटिन symptoms kon sir आपण कहिलेनी symptoms generally diarrhea hela na diarrhea हुए and the stool contain blood at the fecal matter contain blood at the time of stool okay or the fecal matter contain the blood severe diarrhea will be caused into the human body the treatment we should take the medicines like emitin enteroquinol and the mexaform of the enteroquinol and the enterovivoform these are the different type of medicines which can cause or we can prevent the Amoebiasis. This is all about your Amoebiasis. Okay, एटा घुसवार किछ आवश्यक नाही खाली लाइफ साइकिल टा मन रखियो तीनटा स्टेज रे होची तापर नेक्स्ट तार मोड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट बस ए सब जिंस इजीली हमें मन रख दे परिबा ओके पिले थैंक यू